forget to like, share and subscribe. Hello students, today we are going to discuss even function and odd function. First, even function. A function fx is said to be an even function if f minus x equal to fx for all x. यानी कोई फंक्शन उसमें x के प्लेस अगर हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स और वापस से वही फंक्शन आ जाए, देन वी से इट इज इवन फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, let fx equal to x square. Now find value of f minus x is equal to fx equal to x square, then f minus x means minus x whole square. Minus x whole square means x square, and which is equal to fx. So f minus x equal to fx. Therefore fx is an even function. Another example, let fx equal to mod x. Since f minus x equal to mod minus x is equal to mod x, and which is equal to fx. F minus x equal to fx. Therefore fx is an even function. Now next point, the graph of an even function is always symmetric about y-axis. Just the graph of y equal to x square. Graph of y equal to x square, fx equal to x square, and let us consider fx as y. So graph of this look like this. हमने पहले भी ड्रॉ किया था in beginning. So symmetric along y axis, and graph of modulus function also symmetric along y axis. This is graph of y equal to mod x, y equal to fx equal to mod x, and this is graph of y equal to fx equal to x square. Odd functions. A function f of x is said to be an odd function if f minus x equal to minus x for all x. For example, fx equal to x means identity function. Identity function is always odd function. Since f minus x, replace x by minus x, so we get minus x is equal to, अब in place of x we can write fx. So f minus x equal to minus fx. Therefore fx is an odd function. Now take another example, polynomial function fx equal to x cube. This is polynomial function. Not all polynomial functions are odd. Odd power fx equal to x cube, fx equal to x, fx equal to x to the power 7. अब since f minus x is equal to minus x cube, अब माइनस क्यू मीन्स राइट माइनस 3 टाइम्स, सो माइनस इंटू माइनस क्या मिलेगा माइनस, सो माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स. देयरफॉर एफ एक्स इज एन odd function. Now graph of odd function. The graph of an odd function is always symmetric in opposite quadrant. For example, graph of identity function.
fx equal to x means y equal to fx equal to x is a straight line passing through origin and makes an angle 45 degree with positive direction of x axis. y equal to fx equal to x. अभी जितना y से दूर है ये लाइन उतनी दूर इधर कितनी y से इधर दूर है, यानी सिमेट्रिक है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में. नाउ सेकेंड कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब. इसका ग्राफ ऐसा होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब. जितना ये पॉइंट इससे इतना दूर है उतना ही इधर वाला पॉइंट इससे दूर होगा. मीन्स सिमेट्रिक इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शंस. नंबर 1, product of two odd functions or two even functions is an even function. Property number 2, product of odd and even function is an odd function. Property number 3, every function y equal to f of x can be expressed as sum of an even and odd functions. A function which is even or odd when squared becomes an even function. The only function which is even and odd both is fx equal to 0, that is 0 function. Let's do some problems. Determine whether the following functions are even or odd. Question number 1, fx equal to this. अब we have to check, हमको चेक करना है कि fx even या odd है, यानी अपन को f माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है. अगर एफ एक्स आएगा तो इवन और माइनस एफ एक्स आएगा तो ओड. f माइनस एक्स इक्वल टू मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना, माइनस एक्स. तो ए टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ए टू दी पावर माइनस माइनस एक्स, तो प्लस एक्स अपॉन ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स. This plus this or this plus this, order is not important, so write a to the power x plus a to the power minus x as it is. So write denominator as it is. अब in numerator taking minus sign common, so first write a to the power x and then write a to the power minus x. And now compare with questions. fx equal to this and this quantity is fx, so equal to minus fx. Since f minus x equal to minus fx, therefore fx is an odd function. Next problem, fx equal to this. So first find value of f minus x is equal to minus x a to the power minus x minus 1 upon a to the power minus x plus 1. Next step, minus x, multiply numerator and denominator by a to the power x. So minus x into, आप चाहो तो ए टू द पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स से लेके एलसीएम में ले सकते हो या सीधा ए टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो. तो ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स, व्हेन वी मल्टीप्लाई बेस सेम में तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी. तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल 0, तो ए टू द पावर 0 1 माइनस 1 इंटू ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स 1 प्लस ए टू द पावर एक्स. Now taking minus sign common from numerator, so minus minus plus, or we write a to the power x minus 1. In denominator 1 plus a to the power x, we can write a to the power x plus 1 is equal to fx. f minus x equal to fx. Therefore fx is an even function. Next problem,
fx equal to log 1 plus x upon 1 minus x. Since f minus x equal to log जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स रखना है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. नेक्स्ट स्टेप, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट. इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1. बाय दिस आइडेंटिटी a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन a रेज टू द पावर माइनस 1. नेक्स्ट स्टेप, यूज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. लॉग m रेज टू पावर n एनी बेस इक्वल टू n लॉग m. तो जो पावर हो आगे आ जाएगी, तो माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. सो माइनस एफ एक्स. एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स. देयरफॉर एफ एक्स इज एन odd function. Next problem, fx equal to this. Now find value of f minus x is equal to minus x whole square minus minus x. Simplify. So x square plus x. अब f minus x not equal to fx or not equal to minus fx is not equal to fx and minus fx. This quantity not equal to fx and minus fx. Therefore fx is neither even nor odd function. Next problem, fx equal to this. fx equal to x into mod x if x is less than equal to minus 1. fx equal to greatest integer 1 plus x plus greatest integer 1 minus x when x lies between minus 1 and 1, and fx equal to minus x mod x when x is greater than equal to 1. Now find value of f minus x. f minus x equal to minus x mod minus x when minus x less than equal to minus 1. In second step, 1 minus x plus 1 plus x minus 1 is less than minus x is less than 1. Next, minus minus x mod minus x and x is minus x is greater than equal to 1. अब now simplify. Minus x mod minus x, so mod x and minus x is greater than equal to minus 1, multiply by minus sign, so we get x is greater than equal to 1. 1 minus x plus 1 plus x, rearrange. So first write 1 plus x and then write 1 minus x. Minus 1 is less than minus x, multiply throughout by minus sign. So we get 1 is greater than x is greater than minus 1. Minus minus plus, so x mod x when multiply by minus sign. So x is less than equal to minus 1. Next step, now rearrange again. First write this term x mod x when x is less than equal to minus 1. Now write middle one, 1 plus x, 1 minus x, and write minus 1 is less than x less than 1. Then write minus x mod x when
x is greater than equal to 1 is equal to fx. F minus x equal to fx. Therefore, fx is an even function. Thank you. Have a nice day.